Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad Anwar. आज की ट्रेनिंग में आप ये सीखने जा रहे हैं कि Microsoft Excel 2016 वर्जन में डेटा मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और ऑफ कोर्स इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप ओल्डर वर्जन्स में और न्यूअर वर्जन्स में भी काफ़ी हद तक अप्लाई कर सकते हैं. So let's look at our data. ये हमारे पास सेल्स का बिल्कुल बेसिक सा डेटा पर रखा हुआ है as sample where we have the closing date and then the region and sales rep name, and then we have customer, product, cost of goods sold, and sales, actual sales which happens. Okay. और ये डेटा हमारे पास इस वक्त एक सिंपल फॉर्मेट में है जैसे कि हम इसको सिंपली एंटर करते हैं इस डेटा को एंड वी डू एवरी डे सच सॉर्ट ऑफ डेटा वी मैनेज एवरी डे. कस्टमर्स की लिस्ट मेंटेन करते हैं, हम अपने सेल्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, राइट. और डे टू डे हमारी जो भी ऑफिस एक्टिविटीज़ होती हैं या लिस्ट्स होती हैं उनको हम इस्टेब्लिश करते हैं. So Excel में अगर हम डेटा के मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करें तो हमारी जो डेटा मैनेजमेंट और यूजेबिलिटी and decision making, all of that enhances so much. Okay, and as business user that should be our target कि हम किस तरीके से आउट परफॉर्म करें और किस तरीके से हमारा डेटा हमारे लिए बहुत यूजफुल है. Okay, that's what we want to learn regarding the data best practices. Okay, so let's go to our sample data. पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि जो डेटा के फॉर्मेट्स हैं वो दो फॉर्मेट्स हैं. एक को डेटा सेट और रेंज कहते हैं, डेटा रेंज कहते हैं, और दूसरे को हम जो सेकंड है उसको हम कहते हैं टेबल फॉर्मेट. तो हमारे पास एक्सेल में इंडीड ये दो चीज़ें होती हैं. I mean our data is organized in these two possible ways: data set or data range, and then table format. Okay, और ये जो करंटली हमारा डेटा है जो रोज और कॉलम्स की सूरत में रखा हुआ है, दिस इज सिंपली कॉल्ड डेटा सेट और डेटा रेंज. ओके, और इसमें आप क्या देखते हैं कि डेटा सेट या डेटा रेंज में आपके पास अंडर डेटा टैब यू हैव द ऑप्शन फॉर असेंडिंग और डिसेंडिंग. ठीक है, किसी भी कॉलम के ऊपर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं तो पूरे डेटा है अकॉर्डिंगली भी अरेंज हो जाता है. ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई डिफरेंट फिल्टर्स ऑन टॉप ऑफ इट. ठीक है, और इन फिल्टर्स में लेट्स से देन वी जस्ट वांट द नॉर्थ रीजन डेटा, लेट्स से. सो हियर वी गो, एंड फ्रॉम नॉर्थ रीजन then we want only Gigi's data. Let's say now this is North region and Gigi's data. और Gigi ने किस कस्टमर को सेल किया, इन सब कस्टमर्स को वो सेल कर रही है. We want only Amazon and Google data. ठीक है, तो ये Gigi का Amazon और Google data नॉर्थ रीजन में वो आ गया. ठीक है, ये है उसका सब सेल्स का इंफॉर्मेशन. सो आप मल्टीपल लेवल्स के ऊपर अपने फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड इफ यू विश यू कैन क्लियर दीज फिल्टर्स, ओके, एंड रीअप्लाई दीज फिल्टर्स in case there are any changes in the data, so you can simply reapply और वो changes रिफ्लेक्ट होकर आपको दोबारा से जो इंफॉर्मेशन है फाइनल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर देंगे. राइट, so ये तो है हमारा data format. Well, and then in the data format we also have and this data format is simple data set. Is simple data set. हमने second format को बात किया था which is called table format.
ओके, पहले हम इन सबको फिल्टर्स को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद अब हम अपने इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंडीड हम ऐसा इसलिए करते हैं कि टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से हमारे पास जो एक्सेल में जो डेटा एनालिसिस की फैसिलिटीज हैं वो बहुत इन्हेंस कर जाती हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट आवर our data set or data range into the table format। और ऐसा करने के लिए आप अपने डेटा पे जाइए एंड प्रेस Control T for table, okay, and my table has headers, yes we have। इसको चेक ऑन होना चाहिए केस के हमारे टेबल में हेडर्स मौजूद हैं and then click OK। So now the data set is converted into table। ठीक है, जब ये टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास एडिशनल एनालिसिस की फैसिलिटीज इनेबल हो जाती हैं जो कि डेटा सेट में अवेलेबल नहीं होती, वो टेबल फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब ये जस्ट फॉर्मेट चेंज है और ऐसा करने से हम टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि डेटा सेट में पॉसिबल नहीं था। यू सी, ओके, एक बार। और दूसरा ये we can enable or disable header row, okay, band rules जो कि highlight करती हैं alternate rows को, और we can highlight the first column or the last column or the banded columns, okay, you understand? rows की बजाय आप columns को दें। Yeah, so in different ways we can present our data quickly using these tools. And then we want to enable filter buttons, yes or no, that option is there. Okay, additionally we can look at under design tab now, we have the option now to insert the slicer। और ये वो एडिशनल टूल्स हैं जो कि आपको टेबल फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। सो we insert the slicer and जो slicers हैं इस टेबल के जो फर्स्ट रो में उसके कॉलम टाइटल्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, which are the headers of the table। तो जो टेबल हेडर है वो हमें अवेलेबल हो गया। We want to further filter this data graphically for customers and let's say for the region। okay कीजिए, तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर और रीजन इन दोनों के स्लाइसेस हमारे पास बन गए। इनको हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से कलर इनको चेंज कर दें जस्ट टू मेक देम अट्रैक्टिव, लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट। एंड देन बाय क्लिकिंग ऑन दीज स्लाइसर ऑप्शंस हम क्विकली अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इंडीड स्लाइसर्स ने क्या किया है कि जो रीजन कॉलम है उसमें से सब यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे फैच कर दिया है, एंड लाइकवाइज कस्टमर के कॉलम में सब यूनिक वैल्यूज को यहाँ पे फैच कर दिया ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ वी वांट टू लुक एट ओनली लेट्स से गूगल डेटा एंड गूगल डेटा इन द वेस्ट रीजन। ओके, वेस्ट गूगल, और इन द नॉर्थ रीजन एज वेल। ओके, हाँ, फिल्टर हो गया ना, या ग्राफिकल फिल्टर्स। ओके, एंड देन अगर तो मल्टीपल चॉइस हमें करना है दैट वी वांट इन द नॉर्थ रीजन एज वेल एज इन द साउथ रीजन और एज वेल एज इन द वेस्ट रीजन, तो हम कंट्रोल से क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल सिलेक्शन होगी नॉर्थ की और वेस्ट की। ओके, दोबारा क्लिक करें तो वो ठीक है, एंड फ्रॉम हियर देन यू कैन रिमूव द फिल्टर्स, clear the filters, and you can clear the filters, okay, that way। slices जब बन जाए तो हम इसके बाद मज़ीद भी slices क्रिएट कर सकते हैं। we go back to the design tab and insert slices, और हम let's say customer और sales के ऊपर भी slices करना चाहते हैं, so we can do those as well, customer and says that let's say for customer we want
कि अमेज़ॉन कस्टमर को दीदी ने नॉर्थ रीजन में जो सेल्स किया है उसका इंफॉर्मेशन आ जाए। सो इट्स दैट, ठीक है, you got it? Yeah. So this way you have very powerful graphical filtration tool, but this is enabled when you have converted your data range to the table format. And how we did that? Data range के ऊपर Control T, Control T करके एंटर कर दीजिए, वो आपका डेटा रेंज टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो थे इम्पोर्टेंट दो डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा नेक्स्ट अभी हम बात करने जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि इसी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट में कि अभी हम फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं और डायनामिक और एक्सपैंडेबल रेंजेस को कैसे बनाते हैं, चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड द ट्रेनिंग। Do subscribe our channel and wish you very best everyone. Rock your day. See you next.